Find the Fourier series fx equal to e raised to minus mod x in the interval minus pi to pi. Now, as soon as we see the interval minus pi to pi minus L to L, we have to check whether the function is even or odd. तो पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि ये गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है. मॉड होने से एक इंडिकेशन तो मिल गया है, बट फिर भी लेट अस चेक इट. टू चेक इवन और ऑड वी मस्ट सब्स्टिट्यूट x की जगह पर माइनस एक्स, so that you get f of minus x e raised to the power minus of modulus of minus x e raised to minus of minus x. लेकिन मॉड्यूलस के अंदर जो माइनस साइन है वो तो कैंसिल हो जाएगी बिकॉज दिस इज द मॉड्यूलस टेंडेंसी. मॉड्यूलस अपने माइनस साइन को खा जाता है. आउटसाइड जो मॉड्यूलस माइनस साइन है मॉड्यूलस उसका कुछ नहीं कर सकता है, बट एटलीस्ट इनसाइड वाली मॉड्यूलस को तो वो खा जाएगा. तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द फंक्शन हैज बिकम सेम, जैसा था वैसा ही बन गया. माइनस साइन ने उसको अफेक्ट नहीं किया. इसका मतलब वी कैन कंक्लूड दैट द फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. वी फाइंड आउट दैट द फंक्शन इज इवन. फंक्शन इवन हो जाने से एटलीस्ट हमारा एक काम तो आसान हो गया. वी डोंट हैव टू फाइंड bn, हमें सिर्फ a0 एंड an सॉल्व करना है. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद a0 which is integration 1 upon l integration 0 to l fx dx. So I'll substitute the L value. As you can see, the L value minus L to L is minus pi to pi. So the L value is pi over here. We get 1 upon pi. इंटीग्रेशन का लिमिट भी हो जाएगा 0 से लेकर पाई. इंटीग्रेशन का फंक्शन अभी मॉड्यूलस हटाकर यू मस्ट टेक ओनली माइनस एक्स बिकॉज मॉड्यूलस जॉब इज डन. अब लिमिट्स नंबर लाइन की राइट हैंड साइड होगी, पॉजिटिव साइड होगी, पॉजिटिव लिमिट्स है तो मॉड्यूलस हटकर सिर्फ x हो जाएगा. अगेन आउटसाइड वाले माइनस साइन को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. इट विल रिमेन e रेज टू माइनस एक्स. नाउ वी शुड इंटीग्रेट e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन एंड द लिमिट वी पुट 0 से लेकर पाई. वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट देन. अब लिमिट्स पुट कर दें. We substitute the limits so that it become 1 upon pi. The first limit e raised to minus of pi upon minus 1. Lower limit e raised to 0 upon minus 1, which can further be written as a0 is equals to 1 upon pi minus e raised to minus pi. But e raised to 0 value is 1. Minus upon minus has become plus and it is 1. So what we get a0 answer. The better way of writing is 1 minus e raised to minus of pi and it is divided by pi. This we get our a0. So first part of the solution हमने कर लिया. We have found out what is a0. Next we need to find out an. an का फॉर्मूला हाफ रेंज का इवन फंक्शन का 2 अपॉन एल होता है. इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स. वी ऑल नो दिस फॉर्मूला. तो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट नाउ एल की जगह पर पाई 2 अपॉन पाई. इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेकर पाई हो जाता है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कॉस का एंगल है nx dx. In this part of the questions we have been using integrations formula e raised to ax cos bx dx, which is e raised to ax upon a square plus b square, and further than that we had a cos bx plus b sin bx. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है इस सेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. e raised to ax cos bx. So let us apply that over here. What is an a value? a value आपको मिल जाएगी e raised to के पावर से. कोएफिशिएंट ऑफ द e raised to पावर x
दैट इज -1। व्हाट इज द बी वैल्यू? बी वैल्यू आपको मिल जाएगी कॉस के एंगल से, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ द कॉस एंगल विच इज n ओवर हियर। तो e raised to minus x upon -1 square plus n square, which is -1 cos nx plus n sin nx, and we have to put the limit 0 से लेकर pi. So we have applied, let me correct this, sin nx. So we have to apply this integration formula over here. फिर हम जानते हैं यार ये साइन वाला टर्म, इसको तो बहुत ही कन्वीनियंटली हम लोग ओमिट कर सकते हैं, बिकॉज साइन ऑफ पाई साइन ऑफ 0 0 होता है। तो व्हाट वी गेट इज an इक्वल टू 2 अपॉन पाई। बिफोर इवन आई पुट द लिमिट, मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख लेता हूँ। आई एम गेटिंग माई न्यूमरेटर माइनस e raised to minus x cos nx and denominator 1 plus n square, limit still waiting to be put 0 to pi. And now I am going to start putting the limit. an is equals to 2 upon pi, upper limit. I substitute first of all the upper limit. Upper limit इसकी बनती है minus e raised to minus pi, उसके बाजू में cos n pi, और डिनोमिनेटर लिख लेता हूं n square plus 1. बेटर वे ऑफ राइटिंग। सिमिलरली दूसरे टर्म में x की जगह 0 पुट करना है, तो माइनस e raised to 0 होगा, cos of 0, and denominator still remains same, n square plus 1. So we have put the limit pi, we have put the limit 0. Let us simplify them furthermore. an equal to 2 upon pi. The first and foremost thing, denominators दोनों भी same है, तो better write it as one denominator, n square plus 1. The numerator minus e raised to minus pi, cos of n pi का वैल्यू -1 raised to n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस e raised to 0 का वैल्यू और cos 0 का वैल्यू दोनों भी 1 होता है। तो लेट मी रिमाइंड यू, cos of 0 का वैल्यू 1 होता है और cos of n pi का वैल्यू इट इज -1 raised to n, रिमेंबर दैट। तो हमने ये दोनों वैल्यूज को यहाँ यूज किया हुआ। cos 0 is 1, e raised to 0 भी 1, cos n pi is -1 raised to n. So what we get, an is equals to is 2 times, I will write it properly, 2 times 1 minus e raised to minus pi, beside that -1 raised to n, and denominator pi into n square plus 1. This is my simplified an's answer. This is my an's answer. So we have got an a0, we have got an an. a0 an फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन में बनाना है आपको फोरियर सीरीज। Thus we write the Fourier series. The Fourier series is fx equal to a0 having summation from 1 से लेकर infinity with the function inside an cos of n pi x by l. You don't have to write the bn part because it is an even function. What is f of x? F of x was e raised to minus mod x. a0 हमें मिला था, let me take it from behind. Yeah, this is a0, 1 minus e raised to minus pi upon pi. Plus we have then summation from 1 to infinity. The an value, this complete an term, I must take that over here. ये बन गया an term और उसके बाजू में cos of nx. So this becomes my Fourier series answer, Fourier series of even function of exponential.